sonographical aspect in small animals. So, in this first lecture, we will discuss about some of the basics of sonography, the machine, the various controls on the machine, what are the working principles, their different modes and artifacts. So before starting, just one thing I would like to know: will it be okay if I go with the mix of English and Hindi, or should I continue in English only? Please, Yes, ma'am, you can use mixed language. mixed language. Okay, fine. So as we all know, what are sound waves? Sound waves, we are mechanical energy waves. Okay, mechanical energy waves are, and they will transmit. So basically, human ear has an acoustic range जहाँ तक उसे सुनाई देगा, and this acoustic range, it is in between the range of 20 hertz to 20 kilohertz. जो भी sound range इस frequency के बीच में होगा, human ear will perceive it. It will be audible to that. But if any sound which is below 20 hertz, वो सुनाई नहीं देगा. They are referred to as infrasound, and any sound which is again beyond 20 kilohertz, they will again not be audible. So higher frequency sound waves, they are known as ultrasound. So any sound wave which are beyond 20 kilohertz, it definitely does not mean that they can be used for diagnostic purpose. तो diagnostic purpose के लिए जो ultrasound waves use होती है, they are in the range of megahertz. तो 1 to 20 megahertz can be the range. और जो जितनी advanced machines हैं, they are very high frequency, they have very high frequency capability, 20 megahertz तक produce कर सकते हैं. तो this is some basic about the ultrasound waves. And the production of these ultrasound waves, it is generally related with two main effects. One of them is piezoelectric effect and the other is the pulse echo principle. तो जैसे ये देख रहे हैं, ये साउंड वेव है, ठीक है. We all know, because it is a wave, this will be a high frequency wave. Why? Because the number of repetitions is more in 1 second, whereas this is a low frequency wave because repetitions are less in 1 second. And this has some area of compression and rarefaction. At the time of compression, जो सारे molecules हैं, they are attached very close to each other. जो ये high pressure area है, ठीक है. So this represent the area of compression, and when from compression to rarefaction, तो क्या होगा? Pressure will reduce, जिसकी वजह से ये low pressure zone के अंदर जाएगा. Then again it will proceed toward compression and rarefaction. So this is the way a sound wave is propagated through the media. So some of the properties: frequency means number of times the wave will be repeated in a second. And wavelength is distance that a wave travel during one cycle. दो compressions, जो दो मतलब crest हैं या दो trough हैं, इन दोनों के बीच का distance है, that is the wavelength. And both these frequency and wavelength, they are inversely related to each other. जैसे ही frequency कम होगी तो wavelength ज्यादा है. 2 megahertz frequency use हो रही है तो wavelength will be 0.77. लेकिन वहीं पे अगर हम 10 megahertz frequency का transducer use करेंगे, then the frequency will be lower. It will be 0.15 mm. So both of these are inversely related to each other. And as we know by the principle of physics, that velocity is a product of frequency and wavelength. And in all the tissues, see what will be the velocity of sound wave. We all know sound waves, they need a medium to travel. If it will be vacuum, the velocity will be 0. When it is air, तो थोड़े particles आ गए, it got some medium and it is now traveling with a velocity of 331 meters per second. जैसे जैसे अगर कोई medium change हो रहा है, suppose it is a hard medium, bone, like bone, then velocity is very high. It is in the range of 4000 meters per second. But for most of the tissues which are in the body, like soft tissue, brain, liver, all these are in the velocity range of 1540. So ultrasound, what they do, they assume that the sound within the body is traveling with a constant speed throughout, and that constant speed is assumed to be 1540 meters per second. So propagation, now it not only sound wave, how they will propagate, it does not depend solely on the velocity, but it is a product of velocity multiplied by the density of the medium. So
The propagation of sound wave is not related to the velocity, but it is dependent upon the acoustic impedance, which is denoted by the figure Z. उस स्ट्रक्चर का acoustic impedance कितना है, उसी के हिसाब से sound wave उसके अंदर से propagate करेगी. तो दिस acoustic impedance it is affected by two factors. One is density, कि वो कितना dense है, और दूसरा उसके अंदर speed कितनी है. तो सपोज करो, if we are talking about bone की बात करी, bone is a very stiff structure, it is having more density. So because of the density, the speed will be less, but it is also stiff. Bone को हम compress नहीं कर सकते, because of which the velocity is high. तो इन अ सेम स्ट्रक्चर देर आर टू डिफरेंट फैक्टर्स, एक स्टिफनेस है और दूसरा डेंसिटी है जिसके ऊपर वेलोसिटी होती है. तो एक से बढ़ रही है वेलोसिटी और एक फैक्टर से कम हो रही है, स्ट्रक्चर सेम ही है. सो प्रोपोगेशन नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द अकॉस्टिक इंपीडेंस. ये समझने की बात है, क्योंकि हम एक assumption बना के चलेंगे कि ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो व्हाइट दिखेगा, ऐसा है तो ब्लैक दिखेगा. वो सब किसके ऊपर डिपेंड करता है कि देयर विल बी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स. और वो रिफ्लेक्शन कैसे होंगी, वो रिफ्लेक्शन डिपेंड करती है कि उस स्ट्रक्चर पे, उस टिश्यू इंटरफेस पे एकॉस्टिक इंपीडेंस में कितना फर्क है. किसी का एकॉस्टिक इंपीडेंस कम है, ज्यादा है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा वहां से रिफ्लेक्शन होगी और उतना ही स्ट्रक्चर हमें ब्राइट दिखाई देगा. So, when the ultrasound beam they travel with the tissue, there are various type of interactions which happen, which can be like reflection. Reflection किसके ऊपर, जैसा हमने बात की, acoustic impedance के ऊपर डिपेंड करता है. जितना ज्यादा डिफरेंस होगा acoustic impedance में, सपोज करो एक है एयर, एयर की acoustic impedance है 0.0004. So and other structure is bone which is having acoustic impedance of 7.8. There is a high mismatch in acoustic impedance of these two structures. तो कहीं पे भी ऐसा स्ट्रक्चर होगा जहां पे बोन आ जाए या एयर का इंटरफेस हो जाए, तो at that time there will be very high reflections. The other type of interaction can be refraction. Refraction mean when there is two different medium. जैसे हम बोलते हैं कि अगर ग्लास के थ्रू लाइट जाएगी तो वो थोड़ी टेढ़ी होके आती है. There will be some changes in the angle of the propagation of sound wave when it encounters a medium with different density. That is refraction. Absorption का क्या principle है? When the sound wave is traveling, it will undergo some friction with the other particles, because of which the sound wave जिसके अंदर mechanical energy थी, that will get converted to the heat energy. And this principle of absorption is generally used for the therapeutic ultrasound. जहाँ पे हम ultrasound को therapy के लिए use करते हैं, उसमें यही है कि वो mechanical energy heat energy की form में convert होती है, जो कि physiotherapy में use होता है. Another type of interaction is scattering. Scattering कब होगा, जब बहुत छोटे structures होंगे, like say in the range of 0.5 mm. So when the ultrasound beam will interact with very small structure, then they will disperse in different directions, not in a particular direction. So this is scattering. And based on all these interactions, there will be attenuation. Attenuation means the energy of the sound waves, it will reduce when it is going deeper into the tissue. And generally, this attenuation occurs at the rate of 0.5 to 1 decibel per centimeter per hertz. इस तरीके से बीम की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है जैसे जैसे हो जाएगा. So this is a pictorial representation. Here we can see this is absorption. Sound wave was coming, it was having some higher energy. As it was going deeper, some form of the energy was being absorbed, and now the energy of the beam is getting reduced while it is moving deeper. So this is absorption. In reflection, as I told, there will be a difference in acoustic impedance. बहुत ज़्यादा होगा. Suppose this is a stone or any other structure. There is a high degree of acoustic impedance mismatch. So all the ultrasound waves which are produced, they will get reflected back towards the transducer, जिसकी वजह से this structure will appear very white, very white. This is reflection. Next is scattering. Scattering कब हो रहा है? जब छोटे छोटे particles हैं, ultrasound beam when it comes, it strikes with these and they will go into multiple different directions. This is scattering. And this is refraction. When suppose there is a sound and this encounters some interface which is at an angle to this, then the beam will be deflected into some other path. This is refraction. And based on all these type of interaction, there will be attenuation, where energy of the ultrasound signal is getting lower as it is traveling deeper. Now, as we discussed, कि दो important concept है. One is piezoelectric and the other is pulse echo principle. Piezo means pressure and electric means electricity. So what does it mean? जो अल्ट्रासाउंड है हमारे पास, उसके अंदर ट्रांसड्यूसर है, प्रोब है.
दे आर मेड अप ऑफ सम क्रिस्टल विच आर पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स. उनके ऊपर क्या होगा, अगर प्रेशर लगेगा, डिफॉर्मेशन होगी, तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिसिटी बनाता है. दिस इज पीजोइलेक्ट्रिक. एंड देयर इज अ रिवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट which states when an current is applied. Current लगाएंगे, the crystals they will vibrate, and upon vibration they will produce sound waves. So these are piezoelectric and inverse piezoelectric effect. As you can see in the image, voltage lagaya, there will be changes in the form of crystals. They will change their shape, because of which an electromagnetic field will be produced. See here also we can see कि जब ultrasound machine में when we put the supply on, electricity on, these crystals they get vibrated and they lead to production of sound waves. And on the contrary, when the sound waves they strike with the crystal, these crystal vibrate and they lead to production of electric current. So these are piezoelectric and reverse piezoelectric effect. Again same बात लिखी हुई है. The other principle is Pearl's echo principle. What Pearl's echo principle states? That suppose this is a transducer, it will emit the ultrasound wave, ultrasound signal in the form of pulses. पल्स का क्या मतलब है कि पल्स के अंदर 3 से 5 वेवलेंथ की कॉम्बिनेशन है. these 3 to 5 wavelengths they will be transmitted by the pulse, and now the transducer will wait for the deepest reflection to come back, and once these echo signals they are received, then again the next pulse will be sent. ठीक है, तो यानी कि ट्रांसड्यूसर एक पल्स भेजेगा, वो सबसे डीपेस्ट स्ट्रक्चर जहां तक जा सकती है वहां तक आएगी, उसके इको सिग्नल्स दे विल रिटर्न बैक, और जब तक सारी इको वापस नहीं आ रही है तो नेक्स्ट पल्स विल नॉट बी फायर्ड. So here we can see this is one pulse. It is going, it will encounter a reflector surface, and upon encountering a reflector it will return back, it will produce its echo. So again this is a graphical representation. ये एक pulse है, इसमें 3 wavelength है. We can see 1 2 3 3 wavelengths, they comprised one pulse. एक pulse send हुई. Now this is the waiting period, this is the listening period. जिस टाइम पे वो echo transducer is waiting for the echo signals, and then again the next pulse is fired. So this is the pulse echo principle. Now coming to the ultrasound machine. The ultrasound machine, it is mainly composed of transducers, more commonly known as probes, and these transducers they are heart of the ultrasound machine. Why? Because the characteristics of the properties, सारी की सारी ultrasound wave जो बनेगी वो transducer के ऊपर ही depend करता है. So they are the heart, they are the core of the ultrasound machine. Apart from this, there is a CPU which will process the information, which will process the echoed signals, और उसी के बेसिस पे it will assign some gray dots कि कितना डेप्थ से सिग्नल आया उसके हिसाब से, कितनी एनर्जी से सिग्नल आया उसके हिसाब से एक डेप्थ एक पर्टिकुलर लोकेशन पे दी जाती है, जो कि बहुत ब्लैक हो सकती है, व्हाइट हो सकती है, ग्रे हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल व्हिच इज रिसीव्ड. Then there is a monitor on which the image will be displayed, and there is some output device which can be in form of USB ports or some printers or CD writer in any form. So if we talk of the transducer, this is the layer of piezoelectric element in which piezoelectric crystals are there. These crystals can be of quartz, or more commonly they are of lead zirconium titanate. Okay? And these are the electrodes. Behind the crystals there will be a positive electrode which will supply the electric signal, and as the electric signal will be produced, these crystals they will start vibrating to produce the ultrasound signals. Behind this there is a dampening block. This dampening block it prevents too much vibration of the crystal, and it ensures that the pulses which are produced वो छोटी छोटी pulses हैं, short pulses, because with short pulses we get very good resolution. We will discuss it later. With these short pulses they will be high frequency. So this dampening block they prevent over vibration of the crystal, and they ensure that high frequency pulses are produced. Then this is insulator, this is plastic housing, and this is lead. So basically this is the structure of transducer, and at 99% of time it is just waiting for the reflections to come back. At 1% of the time the transducer is generally emitting the signals. So these transducers they can be mechanical sectors. They were previously of mechanical sector nature. उसके अंदर क्या होता था, 2-3 crystals होते थे which used to rotate. एक बार एक crystal ने fire किया, then second crystal will fire a signal, and then third crystal will fire a signal. But now the machines they generally have array transducers.
in which the beam is automatically steered. There is no rotation, but electronically steered hoti hain beam. These transducers can be linear transducer, they can be curvilinear, or they can be phased array transducer. Okay, this is linear, curvilinear, and the phased array transducer. So we can see it is producing a rectangular beam. सारी के सारी जितने sound waves आ रहे हैं वो parallel आ रहे हैं. But in curved array and phased array, the beams they are diverging when they are going farther apart. In phased array, the phased array transducer they are mainly used for performing echocardiographic examination. क्यों? क्योंकि echocardiography हम intercostal space से कर रहे हैं in between the ribs, and we are having very limited space where we can place our transducer. So for that, phased array transducers are used. Here we can see this is linear probe, which are generally high frequency transducer. The footprint is straight and they are used for examining superficial structures because they have better resolution, but they cannot penetrate into the depth. Next, the curvilinear probe, they are low frequency transducer. The footprint is wide and they are used for assessing the deeper structures because being low frequency, they can go into large depth. And this is the phased array, which is generally used for performing echocardiographic examination. They are low frequency and the beam will diverge. The footprint is very narrow कि हमें intercostal space से access provide करवा देते हैं. Now, next important component of the machine is control panel. So there can be different type of control panels in different machines. By look, but by functioning they are almost all similar. कुछ बेसिक जो फंक्शंस हैं वो ऑलमोस्ट हर मशीन के अंदर होगा. एडवांसमेंट अलग मशीन में अलग हो सकती है. So there are different type of knobs and the importance of these knobs we will discuss later on, but I want every one of you to make a look on the different knobs which are on this control panel. See, this is these are mode selectors. Okay, by this we can switch to power doppler, by we can switch to color doppler, b mode. Then these are mode selectors. Apart from that उनके साइड में जो round है that can be used for controlling the gain. We can change the gain settings. सब कुछ क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि गेन क्या है, मोड्स क्या है. We can change the frequency of examination. We can opt for a low frequency, high frequency. We can change the depth of examination कि देखना है या कितना दूर से देखना है. ठीक है. And these are hello hello hello. Hello, yes, ma'am. Ma'am, you're audible. The screen is also visible. Hello. Yes, ma'am. Okay, fine, I will continue. Yes, So ma'am. these The are screen is also visible. okay. So we discussed about this panel we have discussed. There are other features like we can measure, we can perform some measurements, we can update, we can freeze, we can store a clip. Here also this is another control panel. Okay, in this you can see these round knobs. They are known as soft keys or functional keys because they do not have any function on their own, बट द फंक्शन इज डिपिक्टेड बाय मोड. कि अगर हम एम मोड में करेंगे तो इनको अलग से फंक्शन आएगा, स्क्रीन के बॉटम के ऊपर दिखाई देता है. बी मोड में करेंगे तो इन नॉब को कोई और काम आ जाएगा. ठीक है. सो दीज आर नोन एज द फंक्शनल की. दिस इज अ पेशेंट एंट्री बटन जहाँ पे हम एंटर करके सारी डिटेल्स डाल देंगे. Here we can select different modes, power, color flow. Then this is depth setting. We can change the depth. We can change field of view. Like if we want to perform examination in 30 degree or 60 or 90 degree or 120 degree like that. We can measure any lesion, the size of a lesion. Again, these are functional knobs. These are TGC knobs, time gain compensation knob. These are for changing overall gain. This is for depth setting. These are various modes. So basically, any control panel will have all the basic buttons. The location may be changed. This is the alphanumeric keyboard. We can write anything. We can label our images.
So we need to know some basic concepts. Reflection, as we have already discussed, it will depend upon the difference in acoustic impedance. जितना ज़्यादा difference होगा उतनी ज़्यादा image reflect back हो जाएगी and the structure will appear white. So it is highest for solid and then followed by liquid and gases. If there is no reflection at all, the structure will appear dark. Example, urinary bladder or the contents in the gall bladder. Okay, वो बिल्कुल black दिखाई देगा and because there is no echo signals, this is known as anechoic. बट द सॉफ्ट टिश्यूज दे हैव इंटरमीडिएट ब्राइटनेस, कोई थोड़ा कम ब्राइट होगा, कोई थोड़ा ज्यादा ब्राइट होगा, बट दे हैव देयर ओन इनहेरेंट प्रॉपर्टी दैट दे आर ब्राइट. दिस इज नोन एज इकोजेनिक. दो स्ट्रक्चर्स आर इकोजेनिक. Now there are some relative terms like isoechoic. Isoechoic means those structures which are having similar echogenicity. Then hypoechoic means if some structure is less bright as compared to the other, and hyperechoic if the structure is more bright as compared to other. Example of hyperechoic are gas liquid. Like I told, gas is having very low acoustic impedance, liquid in the intermediate range. Gas is having very low, then soft tissue is in the intermediate range. Bone is having very high, soft tissue is in the intermediate range. So here, with all these interfaces, there is a high degree of difference in the Z, that is the acoustic impedance. That is why these structures will be hyper reflective and they will appear very white on the ultrasound. So we can see this is an isoechoic lesion having similar echogenicity compared to the surrounding structure. This lesion is hypoechoic because it is comparatively darker. This is hyperechoic. It is bright in comparison to the surrounding area. And this is completely black. That is why it is anechoic with respect to the other. Similarly, if this is the reference color, black will be anechoic. This is hyperechoic because it is somewhat darker. This is isoechoic, and if it is white, then it will be hyperechoic. So, for remembering the echogenicities of the various tissues, we can remember it by mnemonic. For most cats, love sunny places. So, any fluid will be black. Then, renal medulla is having higher echogenicity, followed by renal cortex, then by liver, spleen, and then prostate, or they have said pelvis, renal pelvis. Okay, so this is a criteria where we can match the echogenicity, because in normal it will be like this. If there is some changes in echogenicity, कि अगर मेडुला कॉर्टेक्स से ज्यादा इकोजेनिक हो रहा है, यानी कि देयर इज सम पैथोलॉजी गोइंग ऑन. Now for frequency selection. Frequency of examination will depend upon the size of examination, size of animal and the organ to be examined. Suppose we have to examine a cat or a very small dog, then we can opt for a high frequency transducer. हम 7, 8, 10 इसको use कर सकते हैं. लेकिन अगर large breed का dog आ रहा है, we have to examine a Rottweiler. It is almost impossible to scan it with a 10 megahertz transducer. For this, we will have to go for lower frequency transducer. तभी हमें एग्जामिन हो पाएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम द एनिमल साइज, organ also matters. Suppose if we want to scan a liver which is very dorsally located, then the depth of examination is higher and we need a lower frequency transducer. But for examination of superficial structures like spleen or kidney, a high frequency transducer will serve good purpose. Sorry. Hello, am I audible? Hello? Yes, ma'am, you're audible. Okay, okay. So see, when we are increasing the frequency, okay, suppose we are moving from phased array to curvilinear or to a linear transducer, we are increasing the frequency. With increasing frequency, there will be better resolution. Resolution will improve, but the penetration power of the signals will reduce. We won't be able to scan deeper into the structures. Next thing we need to know is resolution. Resolution means there are two different structures which are lying side by side or one above the another, and we can identify them as different. क्योंकि अल्ट्रासाउंड का क्या मतलब है, हमें डायग्नोज करना है. ठीक है, सपोज देयर इज अ सिस्ट and you are examining, this is, you are using a transducer which is a low frequency transducer. The low frequency transducer, they generally have high pulse length. Pulse length is high, 1.53 mm,
एंड सपोज दिस इज द सिस्टिक लीजन, तो ये पूरा का पूरा अल्ट्रासाउंड वेव जो है यहाँ से फर्स्ट इंटरफेस से जाएगा, a part of it will go towards the second interface, and the transducer will perceive the returning echo as if it was coming from a similar object. ये एकदम dense structure की तरीके से दिखाई देगा. But if we use a high frequency transducer, then this pulse length will be small, and the first reflection will be from the near surface. Then the next signal, next pulse will go to the deeper surface, and now these two will be perceived as two independent signals. Near wall भी दिखेगी हमें, far wall भी दिखेगी, and we can easily resolve it to be a cystic structure. So axial resolution means the two structures which are in line of the ultrasound beams, lying one above the another, they should be identified as separate. So axial resolution at max can be half of the pulse length. Suppose in this, with a 7.5 megahertz transducer, if the pulse length is 0.63, then it can axially resolute those structures which are half of 0.63. मतलब somewhere 0.32 mm तक का होगा तो वो resolve कर देगा, वरना नहीं कर पाएगा. Next is the lateral resolution. Lateral resolution means suppose there are two structures which are lying side by side to the ultrasound signal, and they should be identified as separate. So for this, we should always place the region of interest into the focal zone, because at the focal zone the beam is at narrowest. ठीक है, क्या होता है, ट्रांसड्यूसर ने सिग्नल किया up to certain length, it will maintain the width of the beam. Then at focal point it will be narrowest, and after focal point the beam will start to diverge. तो जितनी नैरो हमारी बीम की विड्थ होगी उतने ये दोनों स्ट्रक्चर उससे अलग अलग स्ट्राइक करेंगे, एंड दे विल बी रिजॉल्व्ड एज सेपरेट. लेकिन अगर हम इसको दूर फार फील्ड के अंदर रखेंगे बियॉन्ड फोकल स्पॉट, देन दे विल बी आइडेंटिफाइड एज सिमिलर. So here is a one pictorial representation to understand these. Suppose these are two reflecting surfaces which are lying very distant to one another, दूर दूर पड़े हैं. तो हमने लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर का भी अगर यूज किया तो फर्स्ट सिग्नल यहाँ से जाएगा, दैट विल बी गोइंग एज सेपरेटली. देन सेकंड सिग्नल इट स्ट्राइक from the blue surface and it is going separately. These are two are perceived as different, so image will identify both as different structure. ये यहाँ पे इसका सिग्नल बना है, इधर सिग्नल बना है, we will identify कि ठीक है this is a hollow organ. But suppose these two structures when they are present very near to each other, the reflected signals they will overlap each other now. So the structure, instead of being imagined as two different structure, will be identified as a single oval type of lesion, and the image will be like white. So it will think that some solid object is there. So to correct this thing, what we can do, we can use a high frequency. From 3 megahertz we can shift to a 7 megahertz transducer. Now it will be able to resolve those structures which are lying very near to each other. Why? Because now these two will again be perceived as different echo signals, and again separate image will be found. Similarly, for the lateral resolution, suppose if two structures which are lying very laterally one to each other, there is enough space, then it does not matter whether we are using a high beam width or a low beam width, they will be perceived as different. यहाँ पे अलग से आ रही है इसका सिग्नल, ये अलग है, इसमें भी इसका भी सिग्नल अलग है, इधर अलग है. लेकिन अगर यही दोनों स्ट्रक्चर का डिस्टेंस आपस में कम हो जाएगा, then at that time if we are using a wide beam transducer, so the signal will come as a single. लेकिन अगर हमने इसी की जगह पे नैरो बीम ट्रांसड्यूसर कर दिया तो इसका सिग्नल अलग से आएगा, इसका सिग्नल अलग से आएगा. So this is the lateral resolution. To identify two structures which are lying side by side to one another, they should be resolved to be two independent identities and not as a single. So now there are various modes of ultrasound. Modes के अंदर क्या है? There is amplitude mode, brightness mode, motion mode, and real time beam mode. Suppose this is a blood vessel, then this is a transducer. The signals will come when it strike with this tissue interface. It will produce in A mode. It will produce this amplitude. Again at the next tissue interface, it will produce another amplitude. This is A mode. In B mode, it will produce some dots with some gray color depending upon the amplitude. If it is a high amplitude signal, more white. If it is a low amplitude signal, more dark. And in M mode, if this structure, because it is a blood vessel, then maybe
it may have some pulsatility, these walls may be moving. So the motion of these structure with respect to time will be recorded. This is the M mode. And in real time B mode, instead of a single beam being displayed, the beam will automatically sweep into multiple different directions and the image will be displayed to provide a real time visualization of the structure of interest. Here, this is a pictorial representation. Suppose this is a heart. This is the first tissue interface. In A mode, signal will be produced. Now again, blood with the septal border, another amplitude signal. Then again, septum with the ventricular chamber, another signal is produced. So this is A mode. In the B mode, different shades of gray will be assigned to these depths. This is the B mode. In real time B mode, complete image will be seen like this. And in the motion mode, the movement of these structure, the movement of ventricular septum, left ventricular wall, all these will be visualized with respect to time. So generally A mode, it is very simple, but it is not most often used. Only use was in ophthalmic examination. Ophthalmic examination में भी हम 2D एग्जामिनेशन का भी यूज करते हैं, लेकिन ए मोड का सिर्फ यूज जो है वो ऑप्थेल्मिक तक ही रिस्ट्रिक्टेड था. एंड इट इज नॉट वेरी फैसिनेटिंग, क्योंकि वो सिर्फ कुछ याद तो नहीं रहेगा ना, सिग्नल बस एम्पलीट्यूड की फॉर्म में आ रहा है, तो इट इज नॉट वेरी कॉमनली यूज्ड. These are pictorial representation of signal. Suppose this is first tissue interface, very strong reflection comes, high amplitude. This is the signal. With respect to time, the beam goes into deeper. Second tissue interface come, there is another signal. Then third interface come, again third. So this is all about amplitude mode. Next is the M mode. It is also known as TM mode or the time motion mode. Generally used for performing echocardiographic examination, and it is known as the eyes pick view. इसके अंदर क्या होगा, जो डेप्थ है स्ट्रक्चर की वो में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली टाइम है. सपोज करो दिस इज एंटायर बी मोड, दिस इज अ डुप्लेक्स मोड. हमने ऊपर बी मोड एग्जामिनेशन किया, उसके बाद वी हैव स्विच्ड ऑन द एम मोड एग्जामिनेशन एंड वी वांट टू स्टडी द मूवमेंट अलोंग दिस लाइन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. So now it has got nothing to do with this frame and nothing to do with this frame. Only जो line of interest है, जहाँ पे हमने M mode cursor लगाया है, इसके ऊपर जो जो भी points हैं, उनकी movement को depict करेगा in the M mode. So suppose this is the septal wall. This movement is being traced here. Okay. नीचे की तरफ यहाँ से ये चैम्बर है posterior wall का, ये यहाँ पे है. This is the pericardium. Pericardial movement is being shown. So all this is the motion mode. In B mode, brightness mode, different shades of gray will be displayed depending upon the amplitude of returning signal. जितना amplitude ज़्यादा उतनी white dot बनेगी. So see, in A mode we got high amplitude. For high amplitude, white dot will be formed. उससे amplitude कम हुआ, थोड़ा gray, और amplitude कम हुआ towards black. And if there is no amplitude at all, it will be entirely black. उस तरीके से B mode image बनती है. So here you can see, if it was simple beam mode image, तो ये first line के ऊपर image बनेगी, फिर next जिस तरीके से move करता जाएगा उधर की B mode. This is simple B mode, but most oftenly used is the real time B mode. In this real time B mode क्या होता है? Signals, they are moved very fast. The beam will automatically sweep, and real time signals, we can see updated frames very fast. So this is an example of B mode image. पूरा स्क्रीन के ऊपर हमें डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे से एक इमेज दिखाई दे रहा है. नाउ नेक्स्ट थिंग वी मस्ट बी नोइंग इज इमेज ऑप्टिमाइजेशन. इन इमेज ऑप्टिमाइजेशन जो हमने कंट्रोल पैनल के अंदर जितने सारे नॉब्स देखे थे, वी हैव टू यूज दोज नॉब्स सो दैट वी कैन गेट ए वेरी गुड क्वालिटी इमेज. सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द मॉनिटर. अगर हमारा मॉनिटर है जो स्क्रीन के ऊपर, वो कैसा दिखाई देगा? इट विल शो द फ्रीक्वेंसी कितने पे हम 5 पे 10 पे कितने पे ऑपरेट कर रहे हैं. इट विल शो अस द गेन सेटिंग्स, कितनी के ऊपर गेन है. इट विल शो अस द डेप्थ, इट विल शो अस द डायनेमिक रेंज, इट विल शो अस द फ्रेम रेट आल्सो नोन एज फ्रेम पर सेकंड और पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी. इट विल शो अस द फोकल जोन. ऑल दीज थिंग्स वी कैन सी ऑन द मॉनिटर. इट विल शो अस द डेप्थ, ये यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, इधर तक 15 सेंटीमीटर है, सब कुछ हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है. So a good sonographic image we should optimize so that it has a uniform grayscale with a good axial and lateral resolution and all the details displayed. Noise, which are unwanted signals which carry no useful information, should be minimum, and there should be no unwanted artifacts.
The organ should be optimized to obtain 2/3 to 3/4 of the screen, and image should be oriented as per the accepted standards. So it is an operator dependent modality. इसमें हमें डिफरेंट नॉब्स का यूज करना है ताकि एक अच्छी सी इमेज हो, एंड वी हैव टू फॉलो द अलारा प्रिंसिपल. अलारा मींस एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल. हमें एक्स्ट्रा एक्सपोजर नहीं देना. ऑल्दो दे आर नॉट hazardous at all, they are very safe, they are non invasive. Only thing is absorption. Because of absorption there will be heating effect, जो हमने बात की थी कि mechanical energy is being converted into heat. So for that also we should go for अलारा principle. सबसे पहले क्या करना है, मशीन को ऑन करना है. एज वी स्विच ऑन द मशीन देन वी हैव टू एंटर द पेशेंट डिटेल्स ताकि सारी इमेज हमारे पास प्रॉपरली आए. एंड देन वी हैव टू select the preset for examination. Suppose if we have to select कि we want to perform abdominal examination or echocardiographic, or we want to go for obstetrical information. Why? Because for all these different type of examination the machine has its own settings. वो ऑलरेडी करके रखेगा. अच्छा कार्डियक है तो हमें जल्दी 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 ऑब्टेन करना है, हाई फ्रेम पर सेकेंड चाहिए. लेकिन हार्ट के अंदर क्या है, आइदर ब्लैक और वाइट का ज्यादा है. लेकिन अगर हम एब्डोमेन को देख रहे हैं तो एवरी ऑर्गन इज हैविंग इट्स ऑन डिटेल. तो उसके अंदर हमें एफपीएस ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन we need to see more shades of gray. So all these are already present as presets. हमें उसी preset के ऊपर examination को start करना है. This is an example. जैसे अगर हमने obstetrical package के ऊपर abdomen को examine करेंगे, this is the liver and this is the kidney. Then in that case we may misinterpret that there is some lesion into the kidney, some nodular lesion है. While when we switched again back to the abdominal mode, तो वो lesion will disappear. So it is the importance of selecting the already applied presets. The next thing is depth. Depth is a very important parameter. Depth बिल्कुल उसी तरीके से, suppose you have to take some photography. अगर आप उसी स्ट्रक्चर को कितना क्लोजली एग्जामिन कर, नजदीक से फोटोग्राफ लोगे, द रिजोल्यूशन पिक्सल सब कितने अच्छे से आएंगे. लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक पिक्चर लेके रखते हो और उसके बाद उसको जूम करके करते हो, द पिक्सल सब फट जाएंगे, इमेज क्वालिटी विल बी पुअर. सो डेप्थ इज दैट वे कि जहां आप नजदीक जाके इमेज को परसीव कर रहे हो. इट इज अ गुड फॉर्म ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज. सो डेप्थ वी कैन सी ऑन द वन साइड ऑफ द स्क्रीन, and we should adjust the depth so that the organ of interest will occupy 2/3 to 3/4 of the field. Extra depth हमें नहीं रखनी है, because in that case the probe will have to wait for the echoes from the deepest to come. So here you can see this is the optimal depth and this is less depth. Why optimal? क्योंकि 3/4 तक एटलीस्ट इसने ऑक्यूपाई किया और इसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर इमेज के ऊपर आ ही नहीं रहा, तो हमें पता नहीं लगेगा. Now this is a low depth because the entire structure cannot be visualized. This is a high depth because there is much more information which is going beyond, और इधर से हमें कोई सिग्नल हमें चाहिए नहीं. The area of interest is this much only. Other ultrasound signals are simply being lost. And this is the optimal depth in which we are scanning the organ that it is identified at almost 3/4 of the space. Another thing is, इधर हमें डेप्थ में ये ऑर्गन दिख रहा है, बट हमें completely visualize करना है. If we are scanning at this depth, we may miss some lesion. So for once we may have to increase the depth. And when the depth was increased, this is the liver, and this is the diaphragm in lung diaphragm interface. Cranial on the left side is the thoracic cavity, and this black is the effusion in the lungs. So जब हमने depth increase किया उसी time पे we could identify the pleural effusions. Next important parameter is pulse repetition frequency, also known as frame per second. There is no direct button. ठीक है, depth के लिए हम मशीन के ऊपर depth कम ज्यादा करने के लिए हमें एक knob है, but for PRF in 2D mode there is no direct button. इसको alter करने के लिए we have to change the frequency, we have to change the depth, and we have to change the scan area कि हम 30 डिग्री पे देखेंगे या 120 पे देखेंगे, scan area is more, so PRF will be less. 30 डिग्री पे देखेंगे, scan area is less, PRF will be more. Similarly by depth, as I told कि depth जितना नीचे से जाएगा, higher there is a higher depth, PRF will be less. And this PRF, it affects the axial resolution.
इसी इसी वजह से सपोज करो हमें कोई स्ट्रक्चर देखना है विच इज लोकेटेड वेरी सुपरफिशियली, वी नीड गुड रिजोल्यूशन इन दैट, सो वी विल ऑप्ट फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। और जितना डीपर स्ट्रक्चर देखना है, अगर लिवर देखना है तो उसमें हमें रिजोल्यूशन नहीं चाहिए, उसमें हमें पेनिट्रेशन चाहिए, सो वी विल गो फॉर लो पीआरएफ। So we can see this is PRF in a high frequency transducer. This is 3 megahertz transducer. PRF will be high, short pulses will be generated, so repetition will be more. Whereas in a low frequency transducer, larger pulses will be generated and PRF will be less. Next is frequency. Frequency के ऊपर क्या है, जितनी ज्यादा frequency resolution is good but penetration is less. Lower frequency means penetration is more but resolution is poor. And also whenever there is a high frequency, हाई फ्रीक्वेंसी को यूज करेंगे, ऊपर के स्ट्रक्चर सिर्फ दिखाई देगा, नीचे की तरफ जाते हुए इट विल बी एटेन्यूएटेड मोर, देयर विल बी नो सिग्नल्स टू गो इनटू द डेप्थ। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भी मशीन ऑन करनी है, ऑन करने के बाद हमें प्रीसेट सेलेक्ट करना है कौन से मोड पे हम एग्जामिन कर रहे हैं, देन वी हैव टू चेंज द डेप्थ। फर्स्ट थिंग वी हैव टू चेंज द डेप्थ। अगर हम डेप्थ चेंज नहीं करेंगे, बाकी सारी सेटिंग्स को चेंज कर देंगे, देन अगेन वी हैव टू ऑप्टिमाइज द डेप्थ और फिर से सारी सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी। इसलिए फर्स्ट थिंग यू चेंज द डेप्थ, देन यू चेंज द फ्रीक्वेंसी। उस डेप्थ के ऊपर वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करना है जो कि हमें मैक्सिमम विजुअलाइजेशन दे। Based on the depth and frequency, the PRF in itself will be automatically adjusted. So this is an example of frequency. When we are using a high frequency transducer, the structures are very nicely resolved, there is a better resolution. लेकिन frequency low ही तो ये resolution कम है। यहाँ पे vessel है, these are the hepatic vessels which should appear black, but here in this caudal vena cava it is appearing somewhat echogenic. Why? Because it is a low frequency, so there is a poor resolution. Similarly in high frequency the resolution is good, we can see all the structures nicely as separate, but here they are merging into each other when a low frequency transducer is used. So this is the example कि frequency से हमें resolution कैसे effect करनी होगी. Another important thing is focal point and position. Focal point generally on the screen it is represented in form of triangle. जो focal point से पहले area आ रहा है that is the near field and beyond that is the far field. And as I have already told कि the lateral resolution is maximum in the region of focal spot. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, we will move to the next slide. Suppose this is the triangle, this is the focal zone. अगर focal zone को जितना ऊपर रखा means near field is this much and far field is this much. So resolution beyond this focal spot, lateral resolution beyond this focal spot is very poor. कोई structure हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये सब mix हो गया। लेकिन जब हमने इसी focal spot को region of interest यहाँ पे लेके आए, so there is better resolution. इधर नहीं पता लग रहा था, now we can resolve these structures very nicely. This is the importance of focal spot. लेकिन focal spot करने से क्या होगा, नीचे जैसे जैसे लेके आएंगे the PRF will reduce. So only till the region of interest we have to make sure कि हम इसको focal zone को लेके आए. Suppose हम सोचते हैं कि हमें यहाँ तक देखना है, ठीक है, अगर हम unnecessarily यहाँ से हटा के और नीचे focal spot को ले जाएंगे then PRF will reduce. So we have to place the focal zone at the area of interest. And in fact in the modern machines they are multifocal transducers. So instead of placing single focal spot, we can put multiple focal spots. Suppose we want to better identify this place and then this also, so we can place one focal spot here, one here, one here, but by increasing the number of focal spots also the PRF reduces. So we have to keep a balance between these two. अभी देखो ये यही दिखा रहा है कि नियर फील्ड के अंदर रखा तो यहाँ पे रिजोल्यूशन है, इधर रिजोल्यूशन नहीं है। इसमें क्या किया, बिल्कुल ही नीचे ले आए तो फिर से पीआरएफ कम हो गया। हमने सोचा कि रिजोल्यूशन तो बढ़ा देंगे पर पीआरएफ कम होने की वजह से इमेज क्वालिटी खराब हो गई है। बट हियर व्हेन वी हैव केप्ट एट द रीजन ऑफ इंटरेस्ट द इमेज अपीयर्स विद गुड डिटेल। नेक्स्ट इज पावर। पावर का क्या मतलब है, सपोज वी हैव टू इंप्रूव द ब्राइटनेस। हम तो मशीन को, ट्रांसड्यूसर को एक सिग्नल है, एनर्जी वो कितनी पावर पे भेज रहा है, एकॉस्टिक पावर। मैक्सिमम इट कैन सेंड अप टू 100%, 100% एकॉस्टिक पावर के ऊपर सिग्नल भेज सकता है। बट
इट डज नॉट प्रोवाइड मच इम्पोर्टेंस। इसका रीजन सिर्फ यही है, सपोज हमें इमेज का जो सिग्नल ज्यादा ही ब्लैक लग रहा है, वी वांट टू मेक इट समवट वाइट, देन वी कैन इंक्रीज द पावर। लेकिन पावर से इमेज क्वालिटी उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होती, बट बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल इफेक्ट, हीटिंग क्वालिटी, हमें उतना ज्यादा पावर नहीं करना चाहिए, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही करना है। See here, it is a 31 when we are operating at 50% power and when we are operating at 100% power. Almost the quality of image is almost similar, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया. So we need not to unnecessarily increase the power to 100%. अगर 50% पे हमें अच्छे से इमेज मिल रही है तो हम 50% के ऊपर ही रुक जाएंगे, हम नहीं बढ़ाएंगे. दोनों के ऊपर देखो, 50 यहाँ 50% यूज किया तो 31 डेसिबल गेन था, 100% यूज किया तो 30 डेसिबल, यानी कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा पावर बढ़ाने से. यूज दैट पावर इन विच द ऑप्टिमल इकोजेनिसिटी इज ऑब्टेन्ड. नेक्स्ट इज द गेन. गेन के अंदर क्या है, जो हमने सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया, अब इमेज बन गया, देन दिस इज फॉर पोस्ट प्रोसेसिंग. इमेज को हमें प्रोसेस करके उसको ज्यादा ब्राइट करना है, कहीं पे ज्यादा स्ट्रक्चर ब्लैक हो रहा है, then we can improve the gain of the image. So what it will do, it will amplify all the signals, चाहे वो यूजफुल सिग्नल हो चाहे वो नॉइज हो, वो हर सिग्नल को एम्पलीफाई करके ज्यादा ब्राइट दिखाई देगा. सो इम्प्रूविंग द गेन, ओवरऑल गेन, दिस गेन इज ओवरऑल गेन. इसका ये एक डिमेरिट है कि जो नॉइज सिग्नल्स हैं वो भी ज्यादा एम्पलीफाई हो जाते हैं, इसलिए गेन को मैक्सिमम 70% पे रख के ऑपरेट करना है. दिस इज एन एग्जाम्पल. अगर हमने गेन बिल्कुल लो रखा है तो इमेज एकदम ब्लैक दिखेगी. हमने सोचा कि नहीं, इमेज को ज्यादा ब्राइट करना है, तो हमने क्या किया, बहुत ही ज्यादा गेन, ओवर गेन कर दिया. सो इन केस ऑफ ओवर गेन द इमेज इज नॉट यूनिफॉर्म. ये भी ऑप्टिमल गेन सेटिंग नहीं है. तो हमें गेन सिर्फ इतना ही रखना है कि जहाँ पे हम कॉन्ट्रास्ट देख पाए इन बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिमल गेन सेटिंग. अब इसमें हमने क्या किया कि पूरा का पूरा थ्रू आउट द एंटायर डेप्थ सारी की सारी इमेज जो है वो वाइट हो रही है. नेक्स्ट थिंग इज टाइम गेन कंपनसेशन और डेप्थ गेन कंपनसेशन. ये हमने बात की, वेन एवर द अल्ट्रासाउंड बीम इज ट्रेवलिंग थ्रू, सो इट इज गेटिंग एटीन्यूएटेड. ऊपर के सिग्नल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, जितना नीचे से आएगा सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम हो जा रहा था, क्योंकि एटीन्यूएशन के बाद सिग्नल के पास एनर्जी कम थी. So the image displayed on the lower side of the screen, they will be a little bit darker, and the image which are formed superficially are somewhat white as a general principle. तो हमें क्या करना है, टाइम गेन कंपनसेशन करना है कि जो नीचे वाली जो है स्ट्रक्चर, उनका गेन हमें बढ़ाना है, ऊपर वालों का गेन कम करना है. सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये देखिए जो कंट्रोल पैनल है ना, उसके ऊपर these will be the TGC knobs which will be visible. तो जब एक सिग्नल आया ऊपर की तरफ से व्हाइट है, नीचे आया थोड़ा ब्लैक, नीचे तक आया एकदम ब्लैक, एंड वी कैन नॉट सी दिस डिजिटल सेटिंग्स व्हेन दीज टीजीसी नॉब्स दे वर प्लेस्ड न्यूट्रल, एक ही लाइन में थे. फिर फॉर परफॉर्मिंग द टीजीसी, जब हमने टीजीसी को ऑप्टिमाइज किया तो हमने क्या किया, इन स्लाइडर्स को नीचे की तरफ से इन द फार फील्ड वी हैव मूव्ड देम टू द एक्सट्रीम राइट. राइट की तरफ ले जाने की वजह से the distal portion which was initially not visible is now becoming visible. This is the optimal TGC settings. तो देखो ये TGC के अंदर यही चीज दिखाई है कि यहाँ पे हमने सही से एडजस्ट नहीं किया, नीचे वाला एरिया डार्क दिखाई दे रहा है. मूव कर देंगे, हर जगह पे कर दिया राइट साइड में तो ये ज्यादा ब्राइट हो गया, इधर की तरफ लेफ्ट करेंगे. दिस इज द TGC कर्व, जिसमें हमें पता लग रहा है हमने TGC के नॉब्स को कैसे मूव किया है. इधर हमने टुवर्ड्स लेफ्ट कर दिया, सिग्नल कम हो रहे हैं. तो टाइम गेन कंपनसेशन का यही मतलब है कि नीचे नीचे जैसे हम डेप्थ की तरफ आएंगे हमें उधर ब्राइटनेस बढ़ानी है. नेक्स्ट इज रिजेक्ट. रिजेक्ट इज जनरली नॉट फ्रीक्वेंटली यूज्ड. इसका क्या काम है कि नॉइज को हटाता है, लेकिन अगर हम रिजेक्ट को बहुत ज्यादा हाई कर देंगे तो नॉइज के साथ यूजफुल इंफॉर्मेशन को भी हटा देगा. देन जूम. जूम जैसे मैंने बताया है, डेप्थ को अगर हम कम कर देंगे तो ऑर्गन का साइज एनलार्ज हो ही रहा था, बट अपार्ट फ्रॉम डेप्थ वी कैन, after maximizing the organ by changing the depth setting, then also if we feel कि नहीं हमें अभी इसको और enlarge करके देखना है, then only we should go for the zoom button. Zoom is something like the digital zoom. जो कैमरा हम फोटो क्लिक की हुई को जूम करते हैं, पिक्सल फट जाते हैं. अगेन दिस जूम कैन बी ऑफ टू टाइप, रीड एंड राइट जूम. रीड इज वर्स, उसके अंदर पिक्सल बिल्कुल फटेंगे, बट इन राइट
it maintains the pixel density and there is somewhat better spatial resolution. So this is an example of read zoom, while this is an example of write zoom, which is somewhat better. Next is the dynamic range. Dynamic range का क्या मतलब है? Image के through we will understand. Dynamic range, it affects the sharpness. Suppose this is an organ, this is pancreas, this is at the lobe of pancreas, these are the vessel, head, neck. So in this we can identify all the structures very beautifully. We can demarcate. Whereas in this, either the things are very dark or the things are very bright. So this is a narrow dynamic range. Narrow dynamic range का क्या मतलब है कि चीजें एकदम या तो ब्लैक ही दिखेंगी या तो व्हाइट ही दिखेंगी. So this narrow dynamic range can be used when we have to perform, suppose we have to examine urine bladder and we have to see any stones or clots. तो उसके अंदर bladder urine है वो black ही दिखेगा और कोई clots है वो white ही दिखेंगे. At that time narrow dynamic range is good. But suppose we have to scan a portion where there is liver or kidney or spleen, multiple organs, parenchymatous organ, then this low dynamic range, it will just produce, it will give a very high contrast, just black and white, which is not good. In that case we have to go for high dynamic range settings. Next is tissue harmonic imaging. Tissue harmonic imaging से क्या होता है? Suppose all the fundamental frequency, हमने जितनी भी frequency भेजी सभी उसी के multiples में आ रही हैं उसी range में, तो image बहुत noisy है. When we switch THI तो fundamental की जगह पे some harmonics are being received back, जिसकी वजह से resolution improves. See, when we were using 3.6 megahertz, तो इमेज अगर ऐसी आ रही थी, फिर हमने क्या किया, THI ऑन किया. THI ऑन करने से इसी का मल्टीपल, इसका हाफ, 3.6 का हाफ, 1.8 मेगाहर्ट्ज से सिग्नल वापस आए. At that time the image quality is improved. We can see all the details. These hepatic veins, these gallbladder are seen much better. So this is the tissue harmonic imaging. Again, see, when THI is off, we cannot mildly appreciate the margin of liver, but by turning the THI on, the details are very nicely seen. Next, we must also know some of the artifacts, क्योंकि हमने जान लिया क्या क्या नॉब्स हैं, उसके थ्रू इमेज को हमने ऑप्टिमाइज भी कर लिया, बट देयर कैन बी सम आर्टिफैक्ट्स जिसकी वजह से क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर है नहीं हमें लग सकता है कि वो है, या जो है वो दिखाई नहीं देगा. सो ऑल दीज आर आर्टिफैक्ट्स. And why they are formed? Because we just assume that either one thing is कि जिस रास्ते से अल्ट्रासाउंड गई है बस ठीक उसी जगह से वापस आई है. There is no second or third pulse. There are no side lobes, and we assume that the speed is being constant. लेकिन हर जगह constant नहीं है. ये इस speed से वो distance assume करते हैं कि कितने distance से इको आई, कि इतने स्पीड से जा रही है, इतना टाइम लगा तो इतनी डेप्थ होगी, पर हर जगह स्पीड कांस्टेंट नहीं है. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस देयर कैन बी वेरियस आर्टिफैक्ट्स. वन ऑफ देम इज मिरर इमेज आर्टिफैक्ट, मोस्ट कॉमनली सीन एट द डायफ्राम लंग इंटरफेस. ये डायफ्राम है, इधर लीवर है. दिस because there is a high acoustic impedance difference in between the lungs and the diaphragm, so there will be high degree of reflection, और उतना reflection की वजह से ऐसा लगेगा कि जो स्ट्रक्चर ऊपर है वही क्रेनियली दिखाई दे रहा है हमें. सो दिस इज द मिरर इमेज आर्टिफैक्ट. सम ऑफ द एग्जांपल, ये fluid accumulation around the testicles, and because of which there is a high mismatch in the Z, that is acoustic impedance, because of which it is seen as mirror image. जो ऊपर है वही नीचे दिख रहा है. Similarly, here we can see this uterus and this is the mirror image. Here we can see this liver lobe and this is ascitic fluid. This is liver lobe, this is ascitic fluid. Here we can see this is the mirror image. Here this is some nodule in the liver, some lesion, which is again seen on the other side. All these are the mirror images. नेक्स्ट इज रिवर्बरेशन. रिवर्बरेशन कब होगा? जब दो पैरेलल रिफ्लेक्टिव सरफेस एक साथ बहुत नजदीक होंगे. सो सपोज दिस इज स्किन, देन दिस इज द स्टमक लेयर, और यहाँ पे स्टमक के ऊपर गैस है, सो इट इज वेरी हाईली रिफ्लेक्टिव, और दोनों लेयर के ऊपर इट विल गिव अस अपीयरेंस ऑफ लैडर लाइक इक्वी डिस्टेंस. यहाँ से फिर थोड़ी उतनी दूरी पे एक दोबारा लाइन, एक थोड़ी दूरी पे दोबारा लाइन, क्योंकि क्या हो रहा है, these echoes now they will reflect back and forth. यहाँ से आएंगी, ऊपर तक जाएंगी, फिर अगेन नीचे आएंगी,
एंड ना व्हाट द ट्रांसड्यूसर विल परसीव कि ठीक है फर्स्ट सिग्नल हमें यहाँ से आया था तो नेक्स्ट सिग्नल हमें यहाँ से आ रहा है, जबकि यहाँ नहीं आ रहा. दीज इकोज दे आर बाउंसिंग इन बिटवीन दीज. सो दिस इज reverberation which appears like equidistantly placed ecogenic lines which appear like a ladder. So these are example of reverberations. From this tissue we get reverberation. इधर से tissue से ये सब reverberation है equidistant lines. And the way to correct it, जैसे ये foreign body है उसके यहाँ से reverberations आ रही थी. When we change some angle, now there are no reverberations formed. Angle change कर दिया तो now they are not parallel to each other. So this can be corrected in this way. नेक्स्ट इज कॉमेट टेल. इट इज सिमिलर टू रिवर्बरेशन, लेकिन जो साइज है उसमें लार्ज साइज सरफेसेस थे, बट कॉमेट टेल हैपेंस फ्रॉम वेरी स्मॉल साइज सरफेस. सपोज करो दीज अपीयर लाइक सम डर्टी शैडोज. तो जहाँ पे ये सपोज करो एक गॉल ब्लैडर के अंदर कुछ है, तो वहां से दे विल अपीयर लाइक इन द फॉर्म ऑफ टेल. नीचे ग्रेजुअली आते 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 इनका सिग्नल वीक होता जाता है. सो दिस इज द अ टाइप ऑफ रिवर्बरेशन but associated with smaller structures. These are comet tails. जैसे tail जैसा दिख रहा है, ये सब these are all comet tails appearance. Next is the side lobe artifact. Side lobe artifact में क्या होता है? But we assume that there is only primary beam of the ultrasound, but we don't assume there are some side beams also. तो ये side beams भी हैं जो कि जाके signal produce करेंगे. Suppose there is a structure which is having anechoic content like urinary bladder या फिर gall bladder के अंदर है, तो this image is formed from the primary beam. लेकिन ये जो side beam है ये भी कुछ अपनी image interpret करती हैं and which appears like as a rounded ecogenic structures within the anechoic lumen. पूरा urinary bladder या gall bladder के बीच में ऐसा white टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, that is known as a साइड लोब आर्टिफैक्ट. की देखो गॉल ब्लैडर के अंदर साइड से ड्यूडनम है, उसकी इकोजेनिसिटी आ गई. यहाँ पे हार्ट के अंदर ये ब्लैक एंड व्हाइट बस ब्लड होना था, बट सराउंडिंग स्ट्रक्चर से साइड लोब आ गया. इधर गॉल ब्लैडर में साइड से स्टमक का ड्यूडनम का पोर्शन होगा, देन दिस इज साइड लोब आर्टिफैक्ट. इन दिस ब्लैडर दीज आर द साइड लोब आर्टिफैक्ट्स, राउंड टाइप का स्ट्रक्चर विद इन अ ब्लैक ल्यूमेन. सो समटाइम्स वी मे गेट कंफ्यूज कि इकोजेनिक स्लज तो नहीं है, बट नो वी शुड नो द प्रिंसिपल कि ये साइड लोब है. उसके लिए क्या करना है, वो proper scanning we will discuss in next lectures. Then again beam width, क्योंकि beam 2D नहीं है, it is having some width also, so there can be some beam width artifact. उसके अंदर भी क्या होगा, जहां से साइड से जिस specular reflection से आई होगी, that thing we can see within the black anechoic lumen, beam width artifact. Then volume averaging क्या होगा कि बीम जितना जा रहा है वो सब क्या करेगा, whatever जो ऊपर से नीचे तक उसने देखा कहीं ब्लैक है एनिकोइक, लेकिन साइड में कुछ ecogenic content है, so it will average everything. This is known as volume averaging, generally seen in the transverse bladder scan. जैसे अगर हम transverse bladder को देख रहे हैं, इधर से भी कुछ ecogenic content लाए, इधर से भी, but this is not actually present. All this is present because of artifact, this volume averaging, and it can appear like as if there is some sludge which actually is not present. Next is acoustic shadowing. Acoustic shadowing कब होगा, जब highly reflective surface होगा at an angle. Suppose there is stone, यहाँ पे से यूरिन है, ब्लैडर की स्टोन की वॉल है, इन दोनों के बीच में acoustic mismatch है. So most of the images, most of the information will get reflected back and there will be no signal which will go deeper into that issue. उसके नीचे जितना भी यहाँ से स्ट्रक्चर से गया है वो सब ऊपर चला गया, नीचे जाने के लिए कुछ है ही नहीं. So there will be black shadow because there are no echo signals, generally seen with stones or calcified areas or maybe bony structures. कहीं अगर हम ribs के ऊपर रखेंगे, हड्डी के ऊपर रखेंगे, तब भी ऐसा ही दिखाई देगा. So these are example of acoustic shadow. ये stone है, उसके नीचे से ये shadow आ रहा है. In between the kidney, ये kidney के अंदर renal stone है, then we can see these shadows. This is a rib cage, हड्डी है, उसके नीचे से black signal हो गया. This is the acoustic shadow. These are multiple stones, all of them casting acoustic shadow. This is again stone, these are casting shadows. And a next type of artifact is acoustic enhancement. Enhancement क्या होगा, suppose यहाँ से सारे का सारा सिग्नल गया, इधर तक कोई absorption नहीं हुई, कहीं रिफ्लेक्शन नहीं हुई, and now it is having its maximum energy. And when it is going beyond this structure, so it will be having enhanced ecogenicity. So this is acoustic enhancement. There can be some other artifacts. Refraction artifacts means
the image will be perceived at some different location because there is change in angle. Range artifact can happen because we assume that the sound speed is constant in all the medium, and based on speed we calculate the depth. But if in some region the speed is changed, we can assume that organ is displayed at some other location. Speckles, when multiple signals they interact in erroneous form, they lead to formation of some white speckles in the entire image. So today's lecture we can conclude that an ultrasound machine is as good as a sonologist. You can have a very good, very costly ultrasound machine, but if you are not altering the controls on machine, then you may not optimize and you may not get a good image which can be used to achieve at a diagnosis. ठीक है, लेकिन अगर वही उतनी कॉस्टली इमेज नहीं है बट यू आर गुड एट एडजस्टिंग द कंट्रोल्स, देन यू कैन डेफिनेटली ऑप्टिमाइज द इमेज to get very good details and to arrive at a diagnosis. So with this, we will conclude the first lecture. If any doubts, any questions, they are most welcome. Hello? Hello? Mm-hmm. Are there some questions? Hello, am I audible? Good evening, ma'am. I have one question. Yes, Raksha. Ma'am, to correct reverberation, we have to change angle. Then how can we change the angle? Angle means you just there are different motions of ultrasound. In next lecture we will see what are different type of motions you can go with transducer. आपने transducer एक organ के ऊपर रखा है, उसको थोड़ा left right कर दो तो angle बदल जाएगा. You can change the position, you can look for some other echo window. So this is the way you can change the angle. Thank you, ma'am. Okay. Any other questions? I hope there are no more questions. Dr. Karamveer? Yes, ma'am. So now should we just close? I don't know whether there are any queries. No one is responding. Yes, ma'am. Do we have any doubts in any chat box? No, Anything ma'am. like that? Okay, fine. So thank you everyone for your patient hearing. Hello. Hello. मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल. हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन ये मैम, कई बार हम ना ऑर्गन को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, तो इन दैट केस डेप्थ इंक्रीजेस बेटर और वी शुड इंक्रीज द जूम? नो, जैसे मैंने बताया, डेप्थ इज द बेस्ट ऑप्शन. फर्स्ट यू एडजस्ट द डेप्थ. जितना डेप्थ के ऊपर आपको विजुअलाइज हो सकता है, डेप्थ को कम से कम रखिए. उतने में लेके आइए कि जो ऑर्गन है वो 2/3 to 3/4 स्क्रीन को ऑप्टिमाइज कर. देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल मैं यही कहूंगी. आपके पास कैमरा है, आप फोटो खींच रहे हैं, आप किसी चीज के जितने नजदीक से जाएंगे उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी. और अगर आपने एक बार फोटो खींच ली, आपके फोन के अंदर कैमरा में फोटो खींच ली और आप उसको अब जूम करके देख रहे हो, तो उसके पिक्सल्स फट जा रहे हैं. दिस इज द सेम थिंग विद द डेप्थ एंड द जूम. जब हम डेप्थ को ऑप्टिमाइज करके जूम कर रहे हैं, डेप्थ को कम करके जूम कर रहे हैं, देन रिजोल्यूशन इज इम्प्रूव्ड. व्हाई? जैसे ही हमने डेप्थ की कम की, पीआरएफ बढ़ गया. पीआरएफ मतलब पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी. पल्सेस ज्यादा जल्दी जा रही है क्योंकि अब उन्हें नीचे की जो अननेसेसरीली एक्स्ट्रा डेप्थ थी ना, उधर से सिग्नल्स के वापस आने का वेट नहीं करना है. उसे सिर्फ उतना ही एरिया देखना है जितना उसको चाहिए. सो दिस डेप्थ ऑप्टिमाइजेशन इज बेस्ट. और अगर उतनी डेप्थ के बाद भी आपको चाहिए कि नहीं अभी और भी जूम करके देखना है जहां पे आपने ऑर्गन को ऑप्टिमाइज कर दिया, देन यू कैन नाउ स्विच टू जूम. सो फर्स्ट ऑलवेज ऑप्टिमाइज द डेप्थ और उसके बाद जूम की तरफ जाना है. थैंक यू मैम, थैंक यू. ठीक. थैंक यू. Hello, ma'am. हेलो.
Hello, ma'am. Myself Dr. Tahir. I don't have a question, rather I have a suggestion. Like Yes. जैसे हमने गेम, जी मैम, जैसे हमने देखा कि जब हमने गेम की बात करी, so this whole lecture was full of like technical jargon. इसमें बहुत सारे ऐसे words हैं like it's very difficult for someone who has never been exposed to this university course. Yes, उनके yes. लिए grasp करना सारी चीजें. So can we उनके make it more क्या a करना, bit सॉरी? more simple? Ma'am, I'm Actually, saying yes, yes, definitely. This may seem to be very boring and this may seem to be very difficult, but if we don't have the basic understanding ना, ये इससे भी बहुत ज्यादा है. This is very much limited. देखिए मतलब like what we can say, we can give some analogy कि हम किसी चीज को जान जाएंगे फर्स्ट टाइम पे, इट विल सीम लाइक वेरी 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 डिफिकल्ट, लेकिन उसी चीज को व्हेन वी डू फॉर द सेकंड टाइम, व्हेन वी डू फॉर द थर्ड टाइम, व्हेन वी डू फॉर द फोर्थ टाइम, तो हमें वो समझ आ जाएगा. आज के टाइम पे लग सकता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट लेटर ऑन यू विल गेट टू नो कि हाँ फर्स्ट डेप्थ को देखना है, फिर फ्रीक्वेंसी को देखना है, फिर उसके बाद हमें फोकल पॉइंट को देखना है, फिर उसके बाद हमें अपनी पावर देखनी है या गेन देखनी है. I also believe that actually it takes time. That is why it is that much big science, na. लेकिन in the first day, what I believe is, if someone is retaining even 5 to 10% from this lecture, honestly speaking, just 5 to 10%, and is showing interest, then he can definitely learn more. क्योंकि ये तो सिर्फ एक beginning है ना. मतलब in 3 days, who can believe that he can be master of ultrasound? This technique, it takes really long time. This is something means it is, जैसे हर चीज को बोलते हैं आर्ट भी है साइंस भी है, you have to see it more often, you have to perform it more often, then the things will be very clear. Then you have to again correlate with the science, you have to perform, you have to correlate with the science. So definitely it will feel difficult for the first day, but I cannot think of oversimplifying. अगर oversimplify करके दे सकते हैं, but that will not give you a good understanding. My main motive for this lecture was कि I should be somewhere able enough to make the concepts a little bit clear. But again, if all of you can feel very free, if you have some doubts, you can definitely maybe try and contact me anytime. I'll be readily available to help in any way possible. But I don't know how can I just simply oversimplify this मैं thing. मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि हम गेन की बात करते हैं तो उससे क्या डिटेल्स हमें मिल जाती हैं कि जो हमें इमेज में कुछ डिटेल चाहिए होती है वो क्लियर हो जाती है. तो हम अगर इसको एनालॉजी इसकी करें एज हमारे पास टीवीज जो हमारे पास है या मोबाइल में कॉन्ट्रास्ट जैसे रहता है, ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, ब्राइटनेस कम करते हैं, या हमारे पास एक्स मशीन्स रहती है फोन में, जैसे हम ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, ब्राइटनेस कम करती है, तो तो ओवरऑल सब gain is related to brightness. Gain is related to brightness. It will make the image look more whiter. यस मैम, आई एम सेइंग द सेम थिंग. आई एम सेइंग लाइक एक एनालॉजी बन गई ना कि गेन को याद रखने से बेटर है आप फोटो कॉन्टेक्ट जैसे आप अपना बढ़ा रहे हो नीचे कर रहे हो तो वही है गेन. तो मैं यही कह रहा हूँ कि एनालॉजी जब मिल जाती है तो चीजें समझना इजी हो जाता है. Right. So I think for many of the things we now have analogy, like depth का हमने समझ लिया, zoom का समझ लिया, like now we have talked about gain का हमने समझ लिया, it is related to the brightness. Then dynamic range is related to contrast, कि कितना black कितना white, वो उसका contrast है, ठीक है. So these are some type of analogy. Yeah, right, you're very right. और एक चीज है जैसे हम इमेजेस पे देखते हैं जो बहुत सारी डायग्राम्स आ गई तो उस पे जैसे एक फार एंड है, नियर एंड है, तो एक रिफ्लेक्शन आके वापस चली गई, फिर दूसरे पॉइंट से पता नहीं चलता है कि ये एक पॉइंट है कि ये दो पॉइंट्स हैं. तो अगर हम उसके बदले ऐसा करके ऑर्गन को समझाए लाइक इंस्टेड ऑफ सेइंग लाइक ए पॉइंट बी, हम ऐसा करें कि जैसे लिवर हमारे पास है या कोई भी ऑर्गन है तो डायरेक्ट लाइक एग्जांपल बेस्ड अगर कुछ मिल जाए ना इंफॉर्मेशन तो रिटेन करना इजी रहता है. सिंपली ओके, ठीक है. मैंने ये इसका एक स्ट्रक्चरल डायग्राम दिया था. इन स्ट्रक्चरल डायग्राम वी जस्ट सेड लाइक दिस इज द इन फॉर एक्सेल रेजोल्यूशन. हमें फर्स्ट लाइक सिस्ट है, एक सिस्ट, उसकी ऊपर नियर वॉल और फार वॉल को डिफरेंशिएट करना है. बट इन लेटरल रेजोल्यूशन वी कैन से कि एक किडनी है, किडनी के अंदर दो स्टोन्स साइड बाय साइड पड़े हुए हैं, ठीक है. दो स्टोन्स साइड बाय साइड पड़े हुए हैं, वो छोटे छोटे स्टोन है. अगर हमें छोटे छोटे या तो पता लग जाएंगे कि ये छोटे छोटे स्टोन्स है,
suppose in humans also, then there is a possibility that these stones can simply be flushed out. But how we can know? Only when the lateral resolution is good. लेकिन अगर हमारी lateral resolution good नहीं है तो क्या लगेगा कि नहीं ये दो छोटे छोटे stone नहीं है, ये एक बड़ा stone है. So at that time the chances of flushing are less and maybe we have to Yes, surgically intervene. So this is yes, an ma'am, the example. same. Yes, ma'am, the same way. Like आपने stones की बात कही ना, तो इसे retain करना easy हो जाएगा. Like this, like आपने बोला stone है, instead of don't take me otherwise, ma'am, please. नहीं sure, every comments are most welcome and ऐसे easy हो जाता है retain I'll करना. ऐसे इसको समझना easy हो जाएगा कि stone है kidney में तो दो stones हैं, एक stone है. So instead of like saying point A, point B, थोड़ा Definitely, you are very right. But I actually thought that this lecture will be just for 1 hour duration and explaining so many things. I have tried to make them into very concise form. We can now also I can elaborate it to any depth, but हाँ definitely कुछ point कभी लगेगा कि ये add हो सकता है. Thanks so very much, ma'am. That's it. Okay, thank you. So, any other doubts? I hope now there are none. Yes, ma'am. अभी कोई डाउट नहीं लग रहा किसी का. ठीक है. Then we will just close with this session. Yes, And sir. again, we will meet tomorrow. And I just apologize for inconvenience caused to you all on my behalf because I could not get connected with my Zoom or Google Meet. I'm sorry for that. And thank you all for your patient hearing. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Nice.